Crack the ITI Diploma Electrician Interview. Top 23 questions and answers. दोस्तों, इंडिया में 80% इलेक्ट्रिशियन अनऑर्गेनाइज सेक्टर में काम करते हैं, जहां पे उन्हें सिटीज और एरिया के हिसाब से पे मिलता है। अगर आप मेट्रो में रह रहे तो आपको ज्यादा मिलेगा, छोटे से टाउन में रह रहे, टीयर 2 या टीयर 3 टाउन्स में रह रहे तो कम मिलेगा। लेकिन बाकी 20% इलेक्ट्रिशियन बड़ी बड़ी कंपनीज जैसे टाटा, इंडियन रेलवे, एमएनसीज या कोई गल्फ कंट्रीज में काम कर रहे हैं। कंट्रीज में ऑर्गेनाइज सेक्टर का हिस्सा है, जहां पे उन्हें फिक्स सैलरी, मेडिकल बेनिफिट और जॉब सिक्योरिटी मिलती है। इन दोनों सेक्टर के बीच सबसे बड़ा फर्क क्या है? ऑर्गेनाइज सेक्टर में जॉब के लिए आपको एक इंटरव्यू देना पड़ता है। अगर आप आईटीआई या डिप्लोमा पास है और एनएपीएस, नेशनल अप्रेंटिस या किसी बड़ी कंपनी में सिलेक्ट होना चाहते हैं तो आपको उनका इंटरव्यू क्रैक करना पड़ेगा। आज इस वीडियो में मैं आपको वो इंटरव्यू क्रैक करने के लिए प्रोफेशनल आंसर जो आपको यूज करना पड़ेगा उसे देने आया हूं। मैं सागर जायसवाल आज इस वीडियो में आपको देने वाला हूं 20 सबसे ज्यादा पूछे जाने वाले टेक्निकल और एचआर क्वेश्चंस के एग्जैक्ट स्क्रिप्टेड आंसर। मैंने सारे क्वेश्चंस को मिक्स कर दिया है ताकि आप हर सिचुएशन के लिए तैयार रहे। तो लेट्स स्टार्ट 20 मास्टर्स क्वेश्चंस एंड आंसर। क्वेश्चन नंबर 1, टेल मी अबाउट योरसेल्फ। प्रो टिप, यहाँ पे अपनी पर्सनल लाइफ नहीं, सिर्फ अपनी स्किल्स, एजुकेशन और इलेक्ट्रिकल पैशन के बारे में बताएं। इंग्लिश आंसर, आई एम अ डेडिकेटेड एंड सेफ्टी कॉन्शियस प्रोफेशनल with a strong foundation in electrical system. I recently completed my technical certification where I gained hands-on experience with wiring, circuit testing, and electrical troubleshooting. I am highly disciplined, eager to learn, and ready to contribute to a professional team. Question number 2. What is the difference between AC and DC current? And where are they typically used? प्रो टिप, टेक्निकल आंसर को हमेशा पॉइंट टू पॉइंट रखें। इंग्लिश आंसर, अल्टरनेटिंग करंट दैट इज एसी चेंजेस डायरेक्शन पीरियडिकली while direct current DC flows in a single constant direction. AC is primarily used for power distribution in home and industries because it can be transmitted over a long distance efficiently. DC is typically used in batteries, electronics and solar panel. Question number 3. Why do you want to be an electrician? Pro tip, दिखाइए कि आप टेक्निकल प्रॉब्लम सॉल्विंग एंजॉय करते हैं। इंग्लिश आंसर, I want to be an electrician because I have been fascinated by how power works and is distributed safely. It is a highly respected, hands-on profession that requires continuous problem solving. I enjoy seeing the immediate practical result of my work. Question number 4. Can you explain Ohm's law and its significance? Pro tip, बेसिक थ्योरी का फॉर्मूला और उसका प्रैक्टिकल यूज जरूर बताएं। इंग्लिश आंसर, Ohm's law state that voltage equals current multiplied by resistance. V is equal to I into R. Its significance is that it allows electrician to accurately calculate the required voltage, current or resistance in a circuit, ensuring that the correct and safe components are used. Question number 5. Why do you want to work for us? Pro tip, कंपनी की सेफ्टी और ट्रेनिंग रेपुटेशन की बात करें। इंग्लिश आंसर, I want to work for your company because of your outstanding reputation for workplace safety and high quality industrial standard. I know that starting my apprenticeship here will give me the best foundation to build a long-term professional career. Question number 6. How would you safely isolate an electrical circuit before working on it? Pro tip, LOTO that is lockout और tag out का जिक्र जरूर करें। इंग्लिश आंसर, फर्स्ट आई वुड आइडेंटिफाई द करेक्ट सर्किट एंड
turn off the power at the main breaker. Second, I would apply the lockout tagout loco immediately. Procedure. Finally, I would use a certified voltage tester to verify absolutely that the circuit is dead before touching any wire. Question number 7. What have you done to prepare for this electrical apprenticeship? Pro tip. अपनी मेहनत और एक्स्ट्रा रिसर्च को हाईलाइट करके बताइए. इंग्लिश आंसर. I have completed my foundational technical education, strictly studied the national safety course and practice basic writing in my college workshops. Furthermore, I have researched your company specific operation to ensure I am ready to contribute from day one. Question number 8. What is a circuit breaker and how does it differ from a fuse? Pro tip. दोनों का मेन फंक्शन सेफ्टी है पर डिफरेंस रीसेट करने में है. इंग्लिश आंसर. बोथ आर सेफ्टी डिवाइसेस टू interrupt power during an overload or a short circuit. The main difference is that a fuse melts and must be completely replaced after a fault, whereas a circuit breaker simply trips and can be manually reset. Question number 9. What are the different types of electrical wiring system used in a residential building? Pro tip. नए और पुराने मेथड दोनों का नाम ले. इंग्लिश आंसर. द मोस्ट कॉमन रेसिडेंशियल वायरिंग सिस्टम इंक्लूड कॉन्सिल कंडक्ट वायरिंग which is a standard for modern homes due to its safety and aesthetic. Surface conduit wiring and older system like casing and capping or pleat writing. Question number 11. How will you handle the heavy workload and long hour required? Pro tip. अपनी फिजिकल फिटनेस और मेंटल टफनेस को शो करे. इंग्लिश आंसर. I understand that electrical work can be physically demanding. I maintain a healthy lifestyle and stay physically active to ensure I have stamina required. I am highly organized and focused, which helps me to manage my stress and stay productive during long shift. Question number 12. Can you describe what a ground fault circuit interrupter GFCI is? Pro tip. GFCI का प्राइमरी फंक्शन शॉक से बचाना है. इंग्लिश आंसर. A GFCI is fast acting circuit breaker designed to shut off electric power within millisecond when it detects a ground fault. Its primary purpose is to protect people from severe or a fatal electric shock, especially in the wet areas like bathroom and kitchen. Question number 13. How would you prioritize your task as an electrician? Pro tip. Safety हमेशा नंबर 1 पर होनी चाहिए. English answer. I would always prioritize tasks based on a safety and an operational urgency. Any electrical hazard or a critical power failure would be addressed. After securing hazardous situation, I will move on to a scheduled maintenance and routine installation. Question number 14. How would you determine the correct size of a wire for a given circuit? Pro tip. Load और distance का concept clear करें. English answer. I would determine the wire size by calculating the total current load amperage the circuit will carry. I would also factor in the distance of the run to account for voltage drop and then consult the standard electrical course to select the appropriate wire gauge. Question number 15. What do you do in your free time? Pro tip. Productive hobbies के बारे में बताएं जो आपकी फोकस स्किल बढ़ाती है. English answer. In my free time, I enjoy reading technology blogs to stay updated on new electrical and smart home system. I also play team sport like cricket, which keeps me physically fit and helps me build strong teamwork skill. Question number 16. What are the essential skills and qualities needed
to be an electrician. Pro tip, टेक्निकल एंड बिहेवियरल दोनों स्किल मिक्स करके बताएं. इंग्लिश आंसर, strict attention to detail and safety protocol, strong problem solving and analytical skill, physical stamina and good hand-eye coordination, excellent communication skill to work with a team member and contractor. Question number 17. What would you do if you were struggling with an electrical task? Pro tip, ईगो नहीं, हेल्प मांगना एक सेफ इलेक्ट्रिशियन की निशानी है. इंग्लिश आंसर, आई वुड इमीडिएटली स्टॉप वर्किंग टू अवॉइड एनी सेफ्टी रिस्क. आई वुड कंसल्ट अ टेक्निकल मैनुअल और wiring diagram. If I was still unsure, I would not hesitate to ask my supervisor or a senior electrician for guidance. Safety and doing the job right are more important than my pride. Question number 18. What would you do if you had a conflict with your co-worker or contractor? Pro tip, professionalism और project goal को आगे रखें. English answer, I would handle it professionally by speaking to them privately. I will listen to their perspective, remain calm, and focus entirely on finding a solution that keeps the project moving forward without letting the personal feeling interfere. Question number 19. What are your career goals? Pro tip, long-term stability and continuous learning को दिखाएं. English answer, my short-term goal is to successfully complete this apprentice and become a highly skilled licensed electrician. My long-term goal is to take on more complex industrial projects, eventually moving into a supervisory or master electrician role within your company. Question number 20. How would you work as a part of a team as an electrician? Pro tip, teamwork साइट पर सबसे जरूरी है. English answer, I would communicate clearly and constantly with my team member, especially regarding life circuit and safety lockout. I am willing to assist others when my tasks are done, and I ensure that I follow the lead of the site supervisor to keep the workflow smoothly. अगर फ्रेंड आप अभी तक रुके हैं तो मैं आपको देता हूँ 3 एक्स्ट्रा बोनस क्वेश्चन फॉर द इंटरव्यू. क्वेश्चन नंबर 21. What do you know about the company? Pro tip, अपना होमवर्क दिखाएं. Ensure you research the company before going. English answer, I know that your company is a leader in the industrial sector with a massive focus on sustainable energy and modern infrastructure. I have also read about your commitment to strict safety standards and employee training, which is why I want to start my career here. Question number 22. Why should we pick you for this electrician apprentice? Pro tip, ये आपका क्लोजिंग स्टेटमेंट है. कॉन्फिडेंट रहिए. इंग्लिश आंसर, you should hire me because I am deeply committed to learning the trade right now. I have the theoretical knowledge and absolute dedication to safety protocol and work ethic required to handle early morning and tough conditions. I will be a reliable and hard-working asset to your team. Question number 23. Do you have any question for us? Pro tip, हमेशा एक स्मार्ट क्वेश्चन पूछिए, इससे आपका इंटरेस्ट शो होता है. इंग्लिश आंसर, yes I do. Can you tell me what a typical day look like for a new apprentice in your company and what is the first major project I will be assisting on? Conclusion. दोस्तों, अगर आपने ये 20 क्वेश्चन और ये एक्स्ट्रा बोनस क्वेश्चन अच्छे से प्रिपेयर कर लिया तो कोई भी कंपनी आपको रिजेक्ट नहीं करेगी. ऑर्गेनाइज सेक्टर में एंटर करना आपके करियर को एक नई उड़ान देगा. इन आंसर को अपनी नोटबुक में लिख लीजिए और मिरर के सामने प्रैक्टिस कीजिए. अगर आपको ये ट्यूटोरियल पसंद आया तो कमेंट में लिखिए अप्रेंटिस. वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना. मिलते हैं अगले वीडियो में. जब तक के लिए जय हिंद.